The structure of atom, a topic of 11 chemistry. Definition of atom: the smallest particle of an element having its all characters is called atom. Now, fundamental particles of atom. The atom of all elements are made up of identical electrons, protons and neutrons. Only numbers of electrons, protons and neutrons are different in different atoms. So they are called fundamental particles of atom. जैसे सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन होगा, वहीं कैल्शियम एटम में 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन होगा. तो इनका नंबर डिफरेंट है, बट नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन डिफरेंट एटम्स आर सेम. Some properties about fundamental particles. Discovery. Electron was discovered by J.J. Thomson in cathode ray experiment. Discovered by Goldstein in a node ray experiment. Neutron was discovered by James Chadwick in nuclear reaction. Nature. Electron is negatively charged particle, proton positively charged particle, and neutron is neutral particle. Mass. Mass of electron 9.1 into 10 minus 31 kg and AMU matrix 0.00554886 AMU. Mass of proton 1.6725 to minus 27 kg and 1.007277 AMU. Mass of neutron 1.6748 into 10 minus 27 kg or 1.008665 AMU. Relative mass, मतलब mass in comparison to each other. So proton and neutron has almost equal mass, so considered as unit mass 1. And mass of electron is negligible in comparison to mass of proton and neutron. It is 1837 times less than mass of proton or electron, neutron, so considered to be negligible. Charge. Charge on electron and proton but opposite. Electron का negative charge, proton का positive charge. In coulomb, amount of charge is 1.6 in minus 19 coulomb. And ESU, electrostatic unit, used in CBSE system, 4.8 into the minus 10 ESU. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल है, इस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है. न्यूट्रॉन न्यूट्रल है. रिलेटिव चार्ज, ये दोनों पर चार्ज इक्वल बट अपोजिट है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 लिया गया, प्रोटॉन का +1 लिया गया. E बाई एम, चार्ज बाय मास रेशियो. चार्ज भी दिया हुआ और मास भी दिया हुआ, आप कैलकुलेट कर सकते हो. इसे डायरेक्ट है 1.76 कूलम पर केजी. प्रोटॉन के लिए 9.56 into 7 कूलम पर केजी. Atomic number. The number of protons present in nucleus of atom is called atomic number. It is most fundamental property of the atom. मतलब major properties of atom or element depends on its atomic number. For neutral atom, Z equal to P equal to E, because atom is neutral. A neutral atom consists equal number of protons and neutrons. So for a neutral atom, Z equal to P equal to E. X plus ion is formed by removal of 2 X electrons from a neutral atom. So Z equal to P equal to E plus X. This YX minus an ion is formed by addition of X electron to the neutral atom. So Z equal to P equal to E minus X. Mass number. Mass of electron is negligible. So mass of an atom is mainly due to protons and neutrons. Hence, total number of protons and neutrons present in an atom is called mass number. Mass number A equal to N plus P. A very simple question. Predict number of electrons, protons and neutrons
इन दीज स्पीसीज। यूरेनियम 92 235 नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर है। Z इक्वल टू P इक्वल टू 92, न्यूट्रल एटम है तो E इक्वल टू 92, N इक्वल टू A माइनस P 235 माइनस 92। सिमिलरली Fe2 प्लस Z26 मास नंबर 56, तो Z इक्वल टू P इक्वल टू 26, 2 प्लस है मतलब यहां से न्यूट्रल एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो E24 हो गया, और न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्रोमियम 3 प्लस आयन एटॉमिक नंबर 24, तो Z इक्वल टू P इक्वल टू 94, 3 प्लस है मतलब न्यूट्रल एटम से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं तो E21 हो गया, एंड N इक्वल टू 52 माइनस 24। Br minus 3580, Z equal to P equal to 35. Br minus is formed by addition of 1 electron, so E equal to 36 and N equal to 80 minus 35. P3 minus Z 15 है और A 31 है, तो Z equal to P equal to 15. P3 minus is formed by addition of 3 electrons to the neutral atom, so E becomes 18 and N equal to 31 by 15. Isotopes. The atom of same atomic number and different mass number are called isotopes. Same atomic number and different mass number. तो एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण आइसोटोप्स और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो आप कह सकते हो आइसोटोप्स और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन दिखाए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। Z1 है तो P इक्वल टू 1, अब मास नंबर भी 1 है तो N 0 हो गया, यहाँ मास N 1 हो गया या N 2 हो गया। तो अनदर डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप आप कर सकते हो, आइसोटोप कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Isotopes have identical atomic number, so all chemical properties of isotopes are same, but they have slightly different physical properties due to difference in mass. Isobar. The atoms of same mass number and different atomic number are called isobars. For example, argon 1840 and calcium 2040. Isotones. Atoms of having same number of neutrons but different number of protons and electrons are called isotones. Example, potassium 1939, calcium 2040. Proton equal to electron equal to 19 and neutron 20. Here proton equal to electron equal to 20 and the neutron is also 20. So neutron are same and proton electrons are different. Isoelectronics. Atom and ion consisting same number of electrons and different number of protons are called isoelectronics. Example है Z equal to P equal to 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है। अब N3 minus is formed by addition of 3 electrons, तो 7 plus 3 10 हो गया। O2 minus is formed by addition of 2 electrons, तो 8 plus 2 10 हो गया। F minus is formed by addition of 1 electron to neutral atom, so 9 plus 1 10 हो गया। नियॉन एक न्यूट्रल एटम है इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम हो गया। Na plus is formed by removal of 1 electron from neutral atom, so 11 minus 1 10 हुआ। Mg2 plus is formed by removal of 2 electrons from neutral में Mg atom, so 12 minus 2 10 हुआ। Al3 plus is formed by removal of 3 electrons from neutral atom, so 13 minus 3 10 हुआ। Isodiphers. The atoms having same difference between number of neutrons and protons are called isodiphers. Proton का number neutron minus proton का value same होता है। For isodiphers, A minus 2Z are equal. For example, chromium 24 52 and iron 26 56. Proton 24, neutron 28, तो difference 4 का है। यहाँ proton 26, neutron 30, again difference 4 का है। Rutherford model of atom. Rutherford in his experiment scattered fastly moving alpha particles on a thin gold foil. अल्फा पार्टिकल का चार्ज +2 होता है और मास 4 mu होता है। तो ये जो आप अल्फा पार्टिकल का पाथ दिखाया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास द फॉइल इन ए स्ट्रेट लाइन। Some alpha particles get deflected from their path
and very few alpha particles could not pass the foil and bounced back. इस बेसिस पर मॉडल दिया जा रहा है. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास द फॉइल इन स्ट्रेट लाइन विदाउट पंक्चरिंग इट. इट मीन्स दैट मेजर पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी बिकॉज इट कोई रेसिस्टेंस नहीं मिला, इसको एम्प्टी स्पेस मिला, वहां से निकला. Some alpha particles pass through the foil but deflected from their path. एक रिलेशन है, इसको याद करना, नहीं भी याद है कोई बात है. The number of alpha particles deflected from their paths at theta angle n equal to 1 by proportional to 1 by sine 4 theta by 2. This indicates that. अब यहां एक चीज ध्यान दो, अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हो रहा है. The deflection may occur due to attraction or repulsion. तो एटम में इलेक्ट्रोनिगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, बट attraction of electron could not deviate alpha particle because mass of electron is negligible. So deviation cannot occur due to attraction of electron. Now, proton repulsion of proton. A single proton again could not deviate because mass of proton is 1 and mass of alpha particle is 4. This indicates that total positive charge and mass of an atom are situated in a very small volume at its center, which is called nucleus. Total positive charge और mass एक ही जगह है और उसके करीब से गुजरने वाला अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहा है. Very few alpha particles could not pass the foil and bounced back. On basis of this, the observation radius of nucleus was calculated. ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. Radius of nucleus 1.415 into 8 to the 1 by 3 meter. A is mass number. The negatively charged electrons in atom are moving around the nucleus on a fixed circular path called as orbit. ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहे हैं. नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्ड फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड फोर्स, ये एक दूसरे को बैलेंस किए रहेगा. कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. द अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग टू द न्यूक्लियस. द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच is considered to be radius of nucleus. At this point, total kinetic energy of alpha particle is converted to potential energy. So, kinetic energy of alpha particle is half mv square, and potential energy, electrostatic force of repulsion into distance. तो k तो कांस्टेंट है, jd हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, 2e हो गया चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इनका डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर इंटू आर. ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया k 2jd स्क्वायर बाय r. तो नाउ टोटल काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी. तो दोनों इक्वेट करके ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाला जा रहा है. तो सिंपल है, रेडियस ऑफ पॉलिनियम, रेडियस ऑफ पॉलिनियम न्यूक्लियस, मास नंबर दिया होती थे, सीधे ए का वैल्यू पुट कर देना है. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लेके मास नंबर पूछा जा रहा है. डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, ए चार्ज पार्टिकल इन a state of accelerated motion will radiate energy continuously. The electron is moving around the nucleus on a fixed circular path. So it has negatively charged electron has accelerated motion, so it should radiate energy continuously. अगर ऐसा होता तो electrons should be deposited in nucleus moving on a spiral path, but it does not happen. So this model of atom could not explain the stability of nucleus. Line spectral radiation indicates that electron is not radiating energy continuously. स्पेक्ट्रम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. अभी सीधा ये जान लीजिए कि बैंड स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी एंड लाइन स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स
नॉट कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट गेटिंग एनर्जी कंटिन्यूअस। Electromagnetic radiation. According to Maxwell, the radiant energy travel in space with a velocity of light in form of wave and associated with both magnetic field and electric field which are perpendicular to each other. किसी बॉडी से निकला हुआ एनर्जी स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट के ट्रेवल करता है इन फॉर्म ऑफ वेव्स and associated with magnetic field and electric field which are perpendicular to each other. So it is called electromagnetic waves or radiation. Characteristic of wave जानिए, wave का दिखा रहे हैं. Crest and trough. The distance between two crest or two trough is called wavelength. Number of wave per second, that is frequency, is called the speed of light by wavelength. Number of waves per unit length, wave number. Mu bar equal to 1 by lambda it is. Time required to complete a wave, time period T equal to 1 by frequency. The arrangement of all types of electromagnetic radiation in order of increasing wavelength and decreasing frequency is called electromagnetic spectrum. ये different types of electromagnetic radiation दिखाए गए हैं. ये increasing wavelength and decreasing frequency. ये बीच में ये विजिबल रीजन है 7 कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब का वेवलेंथ दिया हुआ है. नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज an ideal body which can absorb or emit radiation of all frequencies or wavelength. The body which can radiate or emit, absorb or emit all radiation of all frequencies or wavelength. This radiation is emitted from black body to black body radiation. When a iron rod is heated, its color changes with rise in temperature. First bright red, orange, yellow, blue. मतलब wavelength डिक्रीज कर रहा है, रेड टू ब्लू आ रहा है. ये दो टेम्परेचर पर दिखाया जा रहा है. तो लोअर टेम्परेचर T1 पर मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा 1 ग्रेटर है, और हायर टेम्परेचर T2 पर जो मोस्ट इंटेंस वेवलेंथ लैम्डा 2 लोअर है. Now Planck's quantum theory. Planck proposed that energy which is emitted or absorbed by a black body is not continuous, but in form of a small packets of energy which is called quantum. A black body can absorb or emit energy only in form of a small packets of energy which is called quantum. Einstein extended this theory and proposed to the energy like radiation is not only absorbed or emitted in form of discrete units, but also propagate in a space in form of a small discrete unit called as photon. Einstein Planck's quantum theory को अप्लाई किया फॉर रेडिएशन. रेडिएशन इज नॉट ओनली एब्जॉर्ब और एमिटेड इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, but also propagated in a space in form of a small discrete units. Energy of photon E proportional to frequency and inversely proportional to lambda, or E equal to hν or hc by lambda, where it is Planck constant. Some questions हैं. Calculate energy and frequency of wavelength. इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे? पहले तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा कर देंगे, एंड ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा कर देंगे. लैम्डा दिया हुआ है, एच और सी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट बल्ब एमिटिंग रेडिएशन 450 नैनोमीटर. कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड. तो वाट मीन्स जूल पर सेकेंड. तो 100 वाट मीन्स 100 जूल पर सेकेंड. इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है. तो फर्स्ट कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन फोटोन. एनर्जी ऑफ फोटोन E equal to hc by lambda.
then calculate number of photons. टोटल एनर्जी 100 है, बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कर लें। नेक्स्ट है कैलकुलेट मैक्सिमम वेवलेंथ इन आंगस्टन दैट कैन इनिशिएट दिस रिएक्शन। ये तो इस क्वेश्चन के लिए, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच आपको दे रहा है 247 किलो जूल पर मोल, और इसको आप कह सकते हो 247 इंटू 1000 बाय एवोगाड्रोस नंबर 6 इंटू 1023 जूल पर मॉलिक्यूल, जूल पर मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल पे इतनी एनर्जी चाहिए। अब इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग 247 इंटू 1000 6 इंटू 23 इक्वल टू hc बाई लैम्डा कर लेंगे, और लैम्डा यही वेवलेंथ आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2 है, जिसका डेल्टा एच दिया हुआ। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग करेंगे। H2 2H, डेल्टा एच है 431 किलो जूल पर मोल, और लाइट यूज कर रहा है 250 नैनोमीटर। लैम्डा यूज कर रहा है 250 नैनोमीटर। तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए। पहले डिसोसिएशन एनर्जी हम लोग मान रहे हैं, निकाल रहे हैं। डिसोसिएशन एनर्जी E1 ले रहे हैं, 431 किलो जूल को जूल में बदला बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये जूल, ये डिसोसिएशन एनर्जी हुआ। देन एनर्जी ऑफ फोटोन E2 hc by lambda 6.626 into 10 to the minus 34 3 into 10 to the power 8 by लैम्डा कह रहा है 250 into 10 to the minus 9 नैनोमीटर है। ये कितना जूल है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो काइनेटिक जो एनर्जी डिफरेंस होगा E2 माइनस E1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा E2 माइनस E1 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस 440 nm का फोटोन एब्जॉर्ब करके 670 nm रिलीज कर रहा है। तो फोटो एनर्जी अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम एब्जॉर्प्शन 1 मोल। तो ध्यान दें। नेक्स्ट, लैम्डा एब्जॉर्ब है 440 और लैम्डा एमिटेड है 670।
440 nanometers, lambda emitted 670 nanometers. So energy consumed for 1 mole of photon, Hc कॉमन ले रहे हैं, lambda absorbed 440 माइनस lambda emitted 670, ये तो एक फोटोन के लिए हुआ, एक मोल के लिए वैगन दो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर। Thank you for being with us. The structure of atom.